मेरे लिए सिर्फ घर है, तुम्हारे लिए सपना है. So yeah, that is one thing which I liked about it. So in the first, I was like, मुझे अपना इंटीरियर खुद ही करना है. बट हम लोग जब डिसाइड कर रहे थे ना कि ये ऐसे करेंगे, वो वैसे करेंगे, our ideas matched. मुझे फर्स्ट टाइम डिजाइन्स मिली, so it was so perfect. बस एक आधी छोटे मोटे इधर उधर changes थे, so I got it changed once and it was again perfect. If something goes wrong here, why they are always ready to make changes. So that is what one thing which I loved. I just got this dream house. That was one line I heard. मेरे लिए सिर्फ घर है, तुम्हारे लिए सपना है. Amazing. Whenever I had any issues or any problems, तो मुझे डिज़ाइन के साथ एग्जीक्यूशन चाहिए, तभी मैं काम करवा सकती हूँ. अदरवाइज तो मुझसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज डिज़ाइन बना के दे दोगे तो मैं क्या करूँगी. What I liked about the team was I got every help during the procurement of stuff like lights and everything, and if I didn't like the design, what is needed, everything, I just got help. It was just a phone call away. इसका मतलब बेसिकली है कि when you buy a house, you already invest in the house, buying a house, and then you make a budget. एक अमाउंट में मुझे अपना घर रेडी करना है. तो जब मनीष ने मुझसे पूछा कि हाउ मच यू आर रेडी टू स्पेंड, आई गेव हिम अ बजट एंड आई वांटेड अ मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस. सो वो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस विद एवरीथिंग, एंड आई टोल्ड हिम कि भाई मुझे फर्नीचर वगैरह भी सब उसी में करना है, सिर्फ इंटीरियर्स ही नहीं चाहिए, मतलब दिस इज़ द होल बजट. सो ही मेड इट लाइक दैट कि वो पूरा बजट उसी में ही कंप्लीट हो जाए. इट डजंट मीन कि कम बजट है कि ज़्यादा बजट है, इट्स जस्ट योर बजट, योर थिंग इन योर माइंड कि तुम्हें कितना पैसा लगाना है उसमें.